स्क्रीन शेयर करूँ. केलंय चालू करा सर शेअर. ओके ओके. Okay, so there we go. So with these rubrics, anguish, abdomen with pain in moaning, whining, pain from clinging persons and furniture too. The remedy is coffee. Aksharja, I gave him 1 dose of coffee. I gave him 3 doses actually. To be given every 5 to 10 minutes. Within 1 dose, he was quiet and he just slept off. एक डोज दिला, उसके बाद में उसकी माँ किसी और के साथ फोन के ऊपर बात कर रही, तो बिफोर शी कुड कम एंड सी ही वाज स्लीपिंग क्वाइटली, एकदम शांत. दैट इज द मैजिक ऑफ सहगल मेथड. लिटरली एक डोज कॉफी 30 and the patient was quiet, sleeping. Only 3 rubrics: anguish, abdomen pain with moaning, pain from clinging person's furniture. कुछ कॉफी के सिंग्युलर्स देखें सर. 5 मिनिटं राहिली. बघूया आपण. हा अजून एक केस होती पण आता ती नंतर कधीतरी. anguish abdomen pain with anguish colic with during paroxysm of intermittent paroxysmal pain जेव्हा असतं, coffee is very good. Clinging convulsively to persons. हाँ, ये कैसे होगा? Convulsively मतलब कैसे? Convulsions कैसे होते हैं ना? Suddenly होते. बीच-बीच में झटके आना. हाँ, तो समझो अगर वो किसी को क्लिंग कर रहा है, और या किसी के साथ है और उसको अंदर से पेन हो गया, एंग्विश हो गया, इट बिकम्स अनबिलीवेबल, तो वो एकदम ऐसे ऐसे, दिस इज कन्वल्सिवली. हाँ, समझ का संज्ञा. यस सर. कॉन्ट्राडिक्शन, हेडेक फ्रॉम. Despair. These are all single remedy rubrics of cough. Despair, head pain from despair, labor during, emotions, ailments from sudden pleasant. कोई अच्छी न्यूज आए तो उसको तकलीफ होती है, ये अजीब है इसका. फैंसीज लाइवली. जैसे हम कॉफी लेते हैं, कॉफी लेने के बाद एक ओके ये ऐसा है वैसा, ये करेंगे वो करेंगे, दैट इज ऑल लाइवली फैंसी. एक्साइटमेंट, सेंसिटिवनेस ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स विथ द फीमेल बिकम्स एक्सट्रीमली सेंशुअस, ऐसा इसका मतलब है. फियर डेथ ऑफ पेन, रेमेडी रुब्रिक, फियर डेथ ऑफ पेन फ्रॉम कॉफी. फ्रैंटिक, toothache in, frantic, ill humor, frantic मतलब पागल जैसा करेगा वो, पागल जैसा बिहेव करेगा. ill humor, throws everything from him. Ill effects of joy, this is very unusual. Ill effects of joy and pleasant surprise भी उसको aggravate करता है. ऐसे थोड़ा उल्टे दिमाग का आदमी है कॉफी वाला. हम लोग खुश हो जाते हैं तो उसको तकलीफ होती है.
एंगर, टीयर्स विथ, रोने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाने के बाद रोने लगता है, बात नहीं करेगा ज्यादा. डिल्यूजन, होम ही इज नॉट एट होम, डिलीरियम ट्रिमेंस. ओके. एक्सटेसी, सेंसिटिवनेस ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स विथ, इतने सेंसिटिव हो जाती है फीमेल्स की थोड़ा इधर उधर टच भी हो जाए और पार्ट्स को तो दे विल गो टू एक्सटेसी डायरेक्टली. फियर फ्रॉम प्लेजेंट सरप्राइजेस. कि अच्छी न्यूज ना आ जाए. सेंसिटिव नॉइज, पेन्स एग्रेवेट, पेन जो भी होता है वो नॉइज के साथ एग्रेवेट करते हैं. और वेक्सेशन जो है हेडेक में कन्वर्ट होता है, मतलब जो छल कपट उसके साथ किया जाता है, तकलीफ दी जाती है, उसकी वजह से उसको हेडेक हो जाता है. These are single remedy rubrics of coffee. I think we should be stopping here. It's 4 o'clock now, right? So that was a very pleasant journey for last 2, 3, 4 days actually. And I am very happy and obliged that you admitted me into your group, given me an opportunity to present myself. Though for many it was kind of repetition, but for many it was kind of revision also. See, there is a difference between revision and repetition. Revision अच्छी लगती है, repetition कभी-कभी बोर लग सकता है. So in any case, there were बहुत नए-नए लोग भी थे, इसलिए मैंने थोड़ा repetition करना ठीक समझा. And that is how it is. Thank you very much. Thank you all for being with me. Thank you, Dr. Rassar, and thank you, Vinod. Thank you, sir. Sidhu, Sanjay, Shishir. Yeah. Thank you very much. Thank you all. Because of you, it was a pleasure for all of us that you are there with us since last 4 days. And I will expect that you should be, if you have a time, definitely this session will going to be continued till the lockdown period. So I will continue with everyone. So tomorrow there will be another good presentation from Dr. Shishir Paranspe. Wow. Shishir will going to discuss the application of Pathak's repertory in practice. So that will be another good thing. And the number of students doesn't know the Pathak's repertory or application of Pathak's repertory. So that will be a good thing for all the students, and it will be a good boost. मी आल्यामुळे खूप मजा आली, पण आम्हाला खूप जणांना ही मेथड पण नवी होती विद्यार्थ्यांकरता स्पेसिफिकली, कारण कॉलेजमध्ये हा आस्पेक्ट खूप क्वचितच काही ठिकाणी सांगितला जातो. त्यामुळे बरेच जण जे होते त्यांना त्याच्या दृष्टीने ही खूप मोठी गोष्ट होती. आणि तुम्ही आमच्या बरोबर असंच राहावं अशी अपेक्षा करतो. And always there. And I request everybody to give any suggestions or feedbacks if you feel like they will reach me. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, and thank you all the participants. Thank you all the doctors, homeopathic practitioners who are there since last 1.5 hours, and they are with me since last one month, more than 1 month. That is great. That is your magnetism. तुम्ही माझे रुब्रिक दिले असतील बरेच. मजा आली पण. Blessings to everybody. Thank you very much. Yes. Thank you, sir. Everyone. Yes. And I will conclude over here. And for those who are not able to join, they can get it on YouTube also. Today it will be uploaded. My suggestion is that all of you should subscribe the channel, so that if you subscribe, you will get every time notification of whatever is uploaded. So my request is there for all candidates, and join our Facebook group also, the Divine School of Homeopathy. Okay. Great. Thank you. Great. Vinod, close the. Thank you. Thank you, sir. Thank you.